नहीं मैम, आपकी तो आती है लेकिन हमारी पर नहीं आती। अच्छा अच्छा, चले ओके। Probably today is the last topic for this course. I'm left with one quiz. I'll be taking a quiz in the next week, inshallah. शायद MCQs ले लूँ, MCQs टेस्ट होगा क्योंकि हमने assignment आप लोगों ने submit किया, but there is no quiz, so I have to have one quiz, right? Today the topic is report writing. As we discussed that there are proposal writing. Proposal writing. We discussed proposal writing और फिर उसके बाद if you remember there were references. Do you remember references? Do you remember references? Yes, ma'am. मैंने डिस्कस किए थे ना, APA style मैंने डिस्कस किया था. In APA style we discussed about how to include in-text citation and then the reference list that we give at the bottom, or we can say at the end of the document. ठीक है, तो अगर proposal हम लिखते हैं उससे पहले अगर for example introduction में we want to have some definitions या explanation हो या कोई चीज हो जो हम किसी और source से उठाते हैं, how to give the in-text citation and how to give the reference list. ठीक है, तो हमारे पास MS ऑफिस में भी ये चीज है, मतलब आप वहां से भी मैन्युअली कर सकते हैं और आप जो है उसको देख के पेपर पे खुद भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर आप लोगों को रेफरेंसेस नहीं आती तो आज मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ा सकती, then we will have another class. ठीक है, आप मुझे बोले अगर आप लोगों को रेफरेंसेस आती हैं तो ठीक है, I'll proceed. बोले जरा. मैम मुझे तो मैडम समझ आती है? आवाज नहीं आ रही मौजम आपकी, शफीक आपकी भी नहीं आ रही मुझे. आप लोग हेडफोन्स पहना करें अगर आप मेरी आवाज. मैडम मुझे तो समझ आती है, बाकी को पता नहीं है. अच्छा, और ठीक है, बस आपको समझ आती है इसका मतलब ये है कि मैंने पढ़ाया है. एक बंदे को समझ आती है बाकी को नहीं आती तो ये मेरा मसला नहीं है. यस मैम. ठीक है, so today I'm going to discuss report writing. और इस रिपोर्ट राइटिंग में मैं पूछूंगी कि कहाँ पे कैसे रेफरेंस देंगे. ठीक है, मैंने ये रिपोर्ट राइटिंग मैंने आप लोग के साथ शेयर की है. ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है? यस मैम, नजर आ रहा है. ठीक है, when we talk about report writing or what is a report, do you know what is a report? हम कहते हैं report yourself to the chairman, report this event to the chairman, report about the annual progress, report about your class, report about your teacher. What does that mean? Do you know? आज आप लोगों ने बोलना है, मैंने नहीं. दिस इज द लास्ट क्लास, तो आप लोगों ने बोलना है. व्हाट इज रिपोर्ट? करें उनको. यस मैम, जानते हैं. बस यही बात है कि हम उनको इन्फॉर्म नहीं जानते तो हैं लेकिन बोले
क्या मुझे आवाज नहीं आ रही? What is the report? किसी की भी आवाज नहीं आ रही, क्यों? अच्छा चले मैं बताती हूँ, मुझे पता है आप लोगों को नहीं आ रहा. Report is, whenever we talk about this word, we say you have to report to the chairman. It means you have to present yourself to the chairman, or you have to show your presence. ठीक है? Again, if there is an event going on and somebody asks you to report the event to the higher authority, so what you will do is that you will be writing the event, about the event, that how it started, how many people participated, किसने क्या किया और आखिर में क्या हुआ, something like that. So it's a stepwise presentation of a procedure, an event, an experiment या कोई भी चीज हो. ठीक है? So report is simply the presentation of a procedure, but there is a particular way of writing a report. ठीक है? Why particular way? Because both proposal writing and report writing come into the category of technical writing. Now there is a difference between the technical writing and academic writing. Do you know what is academic writing? Academic writing is when you write essays या कोई papers हो या इस तरह की चीजें हो. So over there, like in essay, you will be talking about an opinion. कोई opinion है, कोई idea है, ठीक है, और आप उस पे argument बनाते हैं. So it mostly like you go for some subjective writing. ठीक है? While in technical writing, they are more related to administrative purposes. ठीक है? कि हम ऑफिशियल जितनी भी लैंग्वेज है, जैसे हम ऑफिसेज में लेटर्स भेजते हैं, मेमोज बनाते हैं, हम एप्लीकेशंस भेजते हैं, हम प्रपोजल राइट करते हैं, और हम जो है रिपोर्ट राइट करते हैं. सो रिपोर्ट, प्रपोजल राइटिंग, लेटर राइटिंग, memo writing, application writing, or all of these, okay, they belong to technical writing. So whenever we talk about technical writing, it is basically there is a particular way or procedure of writing, and they are sequential in nature. Sequential का मतलब ये है कि for example if you are talking about an event और आप कहते हैं कि इसको report कर ले इस event को, so you won't talk कि event कितना अच्छा था or things like that. So you need not to give your opinion. You will be talking about how it started, how many people participated, what were the contents, or then how it ended. Okay? So it's like there would be introduction, there would be the body, and then the conclusion. Okay? Otherwise, or on the other hand, if we talk about academic writing, is particularly essay writing, you do not need to include titles और हेडिंग्स. ठीक है? जैसे आप हेडिंग्स देते हैं, लेकिन ऐसे राइटिंग में आप हेडिंग्स नहीं देते. यू मेक योर ओन आर्गुमेंट एंड यू जस्ट गो फॉर सम लॉजिकल रीजंस. ठीक है? while like in report writing there is no justification. ठीक है? There is we can say कि कोई justification की बात नहीं होती. There is a particular structure that you have to follow. आप headings देते हैं, आप जो है टाइटल्स देते हैं, और आप एक लीनियर और सीक्वेंशियल वे के थ्रू उसको लिखते हैं. ठीक है? सो दैट यू प्रेजेंट द प्रोसीजर, यू प्रेजेंट द इवेंट, यू प्रेजेंट द डेली रूटीन या जो नॉर्मल इश्यूज होते हैं, यू टॉक अबाउट दैट. ठीक है? Now there is a subtle difference between the report writing and proposal writing, though both of them having the same structure के उसमें introduction होता है, इसमें भी introduction, title page, इसमें भी title page,
there is a particular way of writing the procedure and methodology we have, और फिर findings और then you see the conclusion and references. दोनों का तकरीबन having the same structure, ठीक है? But the subtle difference is that we write proposal before investigation of a problem, while a report is written after investigation of a problem, after analysis of a problem, after the observation of something. When you observe something, when you analyze something, when you test something, when you experiment something, and you see, when you research something, when you get information and you want to present that information, it's basically the report. इसका एक और example है. In seventh semester you will be getting your mini or major projects, ठीक है? So the first thing you will be doing is to write a proposal in order to convince your supervisor that this topic is a good one, ठीक है? जब वो कहते हैं कि ठीक है आप इस पे काम करें, when you start working on that, आप you do a lab work, और उसके बाद जो आप write करते हैं, that's the reports. तो हम उसको कहते हैं lab reports, ठीक है? So report writing is that. Now I want to say more about report writing from the document. Am I sharing? Can you see the page? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे कहते हैं a report is a very formal document written for a variety of purposes. Different scholars have defined the term report in different ways. मतलब बहुत सारे सबने इसको define किया हुआ है, लेकिन simply आप report को ये कह सकते हैं कि if somebody asks you to report this thing, he means to say or she means to say that to present something, to give an account of something, ठीक है? तो यहाँ से मैं जरा definition आप लोग को बताती हूँ. Defines a report as a description of an event, जैसे मैंने आप लोग को कहा, an experience, a statement about a situation or action which is meant to give a reliable and accurate piece of information about its subjects or the event it covers, ठीक है? दूसरा इसको define करते हैं, sees a report as a document which provides an account of something witnessed or examined or of an investigation together with conclusion arrived at a result of the investigation. Now, like if we see this definition, we can also conclude one thing. Like if we analyze the definition, we can conclude one thing, that a report is there are so many types of reports, ठीक है? On the basis of this definition, you see, report can be a simple one. It can just present an event. It can just present an experiment. Okay? So whenever there are experiments, at the core of that particular report, it's the analysis. Okay? So we call it analytical reports. So यहाँ पे कहते हैं of an investigation together with conclusion arrived at as a result of the investigation. ठीक है? तो जहाँ पे हम experiments test करते हैं, analyze करते हैं चीजों को, तो उस पे बहुत ज़्यादा time लगता है. And you see, whenever we have investigations and experiments, that report would be can reach to 200 pages. ठीक है? So a report can be just one page. It can be even 2 or 3 sentences. ठीक है? Or it can be 200 pages up to, depending on the idea, depending on the investigation, depending on the information. कि आपका information अगर broader idea है, so ठीक है, अगर आपका information broader idea है, so you see आप 200 पेजेस तक भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पीएचडी के थीसिस होते हैं, हमारे एमफिल के थीसिस होते हैं, और एमएसके जैसे थीसिस होते हैं, जैसे और जैसे बीएस में आप लोग फाइनल ईयर में थीसिस लिखेंगे या फिर आप जो रिपोर्ट लिखेंगे, दैट रिपोर्ट वुड बी कैन रीच टू 200, 180 पेजेस, 150 pages, 100 pages or 80 pages. ठीक है? तो this can reach to these much pages. So depending on that, we can see कि report जो है, it can be even 3 sentences. जैसे अगर आप लोगों ने when you see the notices on the notice board, that can be from the chairman, or
फ्रॉम एनी अदर हायर अथॉरिटी फॉर द स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज के लिए जो होते हैं कि यू समटाइम यू आर इनवाइटेड टू द पार्टी, और या फिर किसी भी चीज का नोटिस लगाते, सो दैट नोटिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट हम कभी कभी मेमो की शक्ल में भी देते हैं, तो उसको हम रिपोर्ट बोलते हैं। और एक और एग्जांपल भी है इसका, जो शॉर्ट रिपोर्ट्स होते हैं, एक और एग्जांपल भी है कि we can write a report in the form of a letter, we can write a report in the form of a memo, depending it is a short one। ठीक है, अगर आप किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे एम्प्लॉयज के लिए जो चेयरमैन नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाता है, दैट्स अ रिपोर्ट एंड वी कॉल इट मेमो टाइप ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने नोट किया हो, एक और एग्जांपल इसका है, जब when you are in hostel and you want to leave for homes, ठीक है, so what you do that you write an application, basically that application is a memo type। ठीक है, क्योंकि उसमें आप एड्रेसेस नहीं देखते एप्लीकेशन में या फिर लेटर में, उसमें तो प्रॉपर एड्रेसेस होते हैं ना, कि सेंडर एड्रेस होगा, रिसीवर एड्रेस होगा, लेकिन उस एप्लीकेशन में यू ओनली राइट टू एंड फ्रॉम। जो टू और फ्रॉम वाला फॉर्मेट है, दैट्स बेसिकली द मेमो फॉर्मेट। ठीक है, और उसको हम शॉर्ट रिपोर्ट्स बोलते हैं। सो दैट इज बेसिकली यू आर रिपोर्टिंग योरसेल्फ दैट यू वांट टू लीव। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जांपल आप लोगों के लिए। ये आखिर में कहते हैं, वट एवर द डेफिनेशन, रिपोर्ट राइटिंग टेक्स cognizance of particular readership। ठीक है, readership, particular situations and particular relationship between a reader and a writer। आपका क्या मतलब what is your relationship, whether you are a boss or an employee, तो आपके उसके मुताबिक आप रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट्स then are factual documents which give accounts of events, process, methods or system। ये याद रखें कि they are factual documents, उसमें facts और figures होते हैं, which give accounts of events, processes, methods or system। Some are written to record the methodology results and conclusion of investigation। Furthermore, reports provide information of objectives, thus report can range from a short memo to a lengthy one, such as progress reports, health reports, safety reports, cost benefit analysis proposals, research and field reports, and so on। Reports can also analyze and evaluate results from experiments in field or laboratories। जैसे मैंने discuss किया कि we can have short reports, we can have long reports। So depending on the shortness, we can also call it memo type of report, we can also call it letter type of report। But depending on the length, or we can say the experiments, अगर हमारे पास laboratories में experiments होते हैं तो हम उनको analytical reports बोलते हैं। So we have short reports, long reports। Short reports में memos और letter report आता है, long reports में we have analytical reports and informational reports। ठीक है, I hope this is clear। थोड़ी सी अगर आप लोग को समझ आ रही है तो I'll proceed, नहीं तो फिर बता दूंगी। समझ आ गई। अच्छा चलो। समझ आइए? यस मैम। ठीक है, थैंक यू। कोई तो बोल रहा है। यहाँ पे कहते हैं, they can outline proposals for a project, report on the progress of a subject, present research and findings from a project। तो ये बातें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जितनी बातें मैंने की है ये यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे उसी तरह मौजूद है। ठीक है,
टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स फिर हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आप सिर्फ 2 टाइप्स याद रखें, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में हमारे पास मोस्टली लॉन्ग रिपोर्ट्स आते हैं, जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर उसका प्रोसीजर जाके लिखते हैं कि हमने ये रिसर्च किया, ये हमारे पास फाइंडिंग्स आई और ये हमारे पास कंक्लूजन है। और जो शॉर्ट रिपोर्ट्स होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं, जैसे अगर मेमो है तो उसका कोई खास फॉर्मेट नहीं है, टू एंड फ्रॉम लिख के फिर आप मैसेज लिखते हैं और टाइप करते हैं या नोटिस बोर्ड पे ला के लगा देते हैं। So that's not a formal, because there is no particular way of writing and it can take the organizational rules and regulation। ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा अगर रहता है और उसके कितने जितने रूल्स है, अगर वो आपको कहते हैं कि टाइप दिस रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर और अ मेमो, सो यू विल बी गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, सो शॉर्ट रिपोर्ट्स का कोई खास स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, इट कैन जस्ट गो विद द we can say the structure and rules and regulation of the particular department you are working or organization। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसकी यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, जैसे आप लैब रिपोर्ट्स बोलते हैं, वर्क रिपोर्ट है, आई विटनेस रिपोर्ट है, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई कुछ रॉबरी हुआ है तो उसके बाद जो आप आई विटनेस रिपोर्ट करते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, एनालिटिकल रिपोर्ट है। एनालिटिकल रिपोर्ट्स आर necessitated by problems in a step up or opportunities that have come up in a business setup. So they persuade readers to accept certain conclusion as being factual and valid। ठीक है, reports classified according to forms। forms के हम ऐसे, जैसे स्कीमेटिक है, लेटर फॉर्म होता है, मेमो फॉर्म होता है और मिक्स फॉर्म होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है, मैं या जरा the main point that I wanted to make over here is that the structure of the report is, the structure of a report is flexible. It depends on the type and the form one may be writing. If you are writing a memo, so you should follow the memo format. If you are writing a report in the form of a letter, you can follow the format of a letter, जैसे हम addresses देते हैं। ठीक है, if it is a mixed one तो आप mix कर सकते हैं, or if it is analytical you have to follow some rules। लेकिन कहते हैं however has the following structure, a report however has the following structure, इसका ये structure है, the report title, or we can also call it title, summary, introduction, body and recommendations। ठीक है, recommendation, conclusion, और इसके बाद हम references भी लगाते हैं, अगर हमने किसी जगह पे कोई रेफरेंस लिया है तो हम रेफरेंसेस भी लगाते हैं, अगर नहीं लिया हुआ तो या हमने खुद से इन्वेस्टिगेट किया है कोई काम तो उसमें फिर अब रेफरेंसेस की जरूरत नहीं होती। तो इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को पता है कि किस तरह आपने इंट्रोड्यूस करना है उस टॉपिक को। enough background should be given so that the reader can understand the significance of the report। बॉडी तो आप लोग को पता है कि आप कि जो मटेरियल है, जो चीज आप जिस पे बात करना चाहते हैं उसको आप बॉडी में लिखते हैं। ठीक है, इसमें आप सेक्शंस भी बनाते हैं और बॉडी में भी आप इसके अंदर हेडिंग्स डालते हैं कि जो बात होती है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के थ्रू आप कहते हैं। ठीक है, रिकमेंडेशंस आर प्रॉपर suggestions on the issue presented in the report। ठीक है, तो और conclusion present the main points arising from the report। This should be given in a conclusive, definite and brief manner। ठीक है, लेकिन एक और चीज है, ये तो हमारे लिए शॉर्ट रिपोर्ट्स की ये फॉर्मेट होता है, हमें कहते हैं however has the following structure। लेकिन अगर हमारे पास वो क्या कहते हैं उसको, अगर लॉन्ग रिपोर्ट है तो फिर हमारे पास उस अगर शॉर्ट रिपोर्ट्स है तो इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई द पर्सन इज सेइंग दैट इट इज फ्लेक्सिबल। अगर आप रिकमेंडेशन नहीं लेते सो इट्स अप टू यू, यू कैन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, द बॉडी एंड द कंक्लूजन। ठीक है, अगर लॉन्गर रिपोर्ट है, फॉर एग्जांपल इफ इट इज एनालिटिकल रिपोर्ट है, आप टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उसके बाद आपके पास रिजल्ट आते हैं और उस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, फिर आप वो रिपोर्ट लिखते हैं, तो वो रिपोर्ट में फिर हमारे पास वो उसको हम लॉन्गर रिपोर्ट्स बोलते हैं, उसको हम फॉर्मल रिपोर्ट्स बोलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है, उसके लिए टाइटल पेज, एक्नॉलेजमेंट्स। एक्नॉलेजमेंट्स क्या होती है कि when you are performing the test and the experiments, ठीक है, आपकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जाहिर बात है somebody would have helped you in that। ठीक है, तो जिसने आपके साथ हेल्प किया है, you name, you give a list of names
कि इस बंदे ने मेरे साथ ये हेल्प किया है, सो उसको हम एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। तो टाइटल पेज अलग होता है, एक्नॉलेजमेंट पेज अलग होता है, और समरी या फिर इसको हम एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इन द समरी और द एब्स्ट्रैक्ट देयर इज लाइक वी कैन से there is a brief way of telling the whole रिपोर्ट के इसमें क्या क्या है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स समरी। समरी तो आप लोगों को पता है कि जैसे कोई बहुत बड़े राइटिंग हो और उसमें फिर हम समरी लिखते हैं कि दिस पेपर इज अबाउट दिस थिंग, इट हैज यूज्ड दीज इंस्ट्रूमेंट्स और दीज लैब वर्क्स और इट हैज गॉट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। तो वो हमारे पास एक पूरे रिपोर्ट का एक निचोड़ आ जाता है। सो समरी इज दैट थिंग। तो अगर समटाइम पीपल डू नॉट हैव टाइम, दे कैन only read the summary or the abstract. Table of contents में it's another page, उस पेज पे हम लिखते हैं कि इंट्रोडक्शन किस पेज पे है, पेज नंबर देते हैं, प्रोसीजर किस पेज नंबर पे है, और इंट्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, वी गिव टेबल ऑफ कंटेंट लाइक दैट। उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, प्रोसीजर होता है, या वी कैन आल्सो कॉल इट मेथोडोलॉजी, द फाइंडिंग्स को हम रिजल्ट्स भी बोल सकते हैं, एंड कंक्लूजन। सो दिस इज द रिकमेंडेशन और रेफरेंसेस और अपेंडिसेस, ठीक है। This particular structure is for the analytical report, because in analytical report we investigate a problem through tests, through experiments, through questionnaires, through interviews, ठीक है। या हम लोगों को इंटरव्यू करते हैं, वो हमें जब जवाब देते हैं तो वो डेटा हम कलेक्ट करके उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको रिपोर्ट बनाते हैं। सो व्हेनेवर वी हैव एनालिटिकल reports, these reports have this particular structure. It will have a title page, acknowledgements, a summary, table of contents, introduction, procedure, findings and conclusion, recommendation and references, appendices, ठीक है। This is the particular structure that people should follow for analytical reports, ठीक है। या आप analytical report यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं कि procedure और table of contents में findings और conclusion और ये सब में क्या क्या चीजें हैं, what you need to do। और proposal report का भी यहाँ पे बात हुई है कि proposal report कैसे होगा, फॉर्मेट ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल कैसा होगा, टाइटल पेज है, ये सारा कुछ यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दिस डिटेल नोट, बिकॉज आई जस्ट डिस्कस के हाउ व्हाट आर द पार्ट्स। तो वो पार्ट्स आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमसे 2-3 घंटे तो हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। तो आप लोग प्लीज इसको गिव इट अ रीडिंग कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। ये अब रिसर्च उसके लिए है, रिसर्च रिपोर्ट के लिए है कि आप उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। सो प्लीज डू रीड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्लमंद के लिए इशारा भी काफी होता है। व्हेनेवर आई से इट इज इम्पोर्टेंट, तो दैट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं और ये बड़ा अच्छे तरीके से इस बंदे ने एक्सप्लेन किया हुआ है। I hope this is clear now. Yes, miss. ठीक है। मैं जो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स शेयर किए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट राइटिंग भी मैंने शेयर किया हुआ है। राइटिंग मेमो का अपना फॉर्मेट होता है, वो भी यहाँ से मैंने शेयर किया हुआ है। और स्टैंडर्ड मेमो फॉर्मेट में यहाँ से इसको ओपन करती हूँ, आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा है। ये देखिए स्टैंडर्ड मेमोरेंडम या मेमो जो होते हैं, जैसे नोटिस बोर्ड पे हम नोटिस लगाते हैं, दैट्स टाइप ऑफ मेमो। उसको हम कैसे लिखते हैं, टू रेसिपिएंट नेम्स एंड जॉब टाइटल्स, फ्रॉम राइटर्स नेम्स एंड जॉब टाइटल्स, डेट कंप्लीट एंड करंट डेट, सब्जेक्ट लाइन तो आप लोग को पता होता है कि व्हाट इज द पर्पस और डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द मेमो इज अबाउट, ठीक है। फिर आप इसको लिखते हैं और जो भी बात होती है आप 3 सेंटेंसेस में, 2 सेंटेंसेस में, आप 1 पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में या 3 पैराग्राफ में कंप्लीट करके आप पोस्ट करते हैं। सो दैट्स द मेमोरेंडम व्हिच इज बेसिकली अ शॉर्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एक एम्प्लॉय मेमो फॉर्मेट है। ये देखिए, ये किसी एम्प्लॉय को किसी कोऑर्डिनेटर ने या सीईओ ऑफ द कंपनी ने लिखा हुआ है और उसने इसमें जैसे हम किसी को विश करते कोई चीज तो हम नोटिस लगाते हैं, दैट इज द मेमो बेसिकली।
हम लोगों को इनवाइट करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम एक नोटिस लगाते हैं, दैट्स अ मेमो फॉर्मेट। तो उसका एक सिंपल तरीका है कि इट इज वी राइट द डेट, वी राइट टू एंड फ्रॉम और फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट लिखते हैं, दैट्स इट, दैट्स द फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें डेट, यहाँ पे आपने डेट लिखना होता है, टू ऑल द एम्प्लॉयज, फ्रॉम का किस से, किसने लिखा हुआ है, रिसाइकलिंग कोऑर्डिनेटर, ये अब कोऑर्डिनेटर की तरफ से है। और आर ई मतलब सब्जेक्ट इसका क्या है, रिसाइकलिंग प्रोग्राम अचीवमेंट्स। अब किसी कंपनी ने रिसाइकलिंग प्रोग्राम में कोई अचीवमेंट्स की है, तो वो लोगों को रिपोर्ट करते हैं, वो बाकी सारे जितने भी एम्प्लॉयज है वो कोऑर्डिनेटर उनको रिपोर्ट करते हैं, तो उसने मेमो लिखा है और शायद नोटिस बोर्ड पे लगाया होगा। ठीक है, कहते हैं कंपनी नेम, आप अपनी तरफ से जो भी कंपनी इज करंटली डूइंग अ गुड जॉब रिसाइकलिंग ड्यूरिंग दिस इज। अब उसने सिर्फ बात की है कि रिसाइकलिंग प्रोग्राम के जितने भी अचीवमेंट्स है, तो लास्ट में कहते हैं कीप प्लीज कीप अप the good work. If you have any questions, you can reach me at this phone number. Thank you for your assistance and participation. Bas. Okay, so this is basically a memo, and a memo is the short, is a type of short report. ठीक है, तो आई होप मेमो की आप लोग को समझ आई कि मेमो जो है इट्स अनलाइक लेटर राइटिंग, और ये रिपोर्ट राइटिंग है, but it is a short report, it's an informal short report, जहां पे हम हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। अब समझ आई सबको? यस मैम। I'll be taking a quiz in the next class. ठीक है, ठीक है मैम। अब खुश, बस इतना ही काफी है, एंजॉय करो। और क्या कहते हैं उसको, मैम ये लास्ट क्लास ही था ना?